Hello guys, good morning to everybody. So let's start our session. It is a beautiful session on science and technology, environment and ecology and geography mapping. Good morning Anupam. I hope I am audible and visible to each and every student. So let's crack UPSC CSE with India's largest learning platform, that is Unacademy. Everybody knows which is the largest learning platform of Unacademy. Okay guys, just give me a minute guys. Just give me a minute. Just a minute. Yes, done. So let's crack UPSC CSE with India's largest learning platform, that is Unacademy. This is about me guys, you already know about me. On Unacademy you will get daily live classes. These are very crucial for your pre as well as mains preparation. There are structured courses available on Unacademy which are again available on Plus as well as Iconic platform, and if you want to study in a structured manner in a proper way, you should go for the Plus or Iconic. Live test and quiz is also available on Unacademy. Everything that is happening on Unacademy is in recorded format, so you will get unlimited access to each and every thing. These are India's top educators who will help you to crack UPSC CSE examination. Okay, these are the subjects. अब यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है, when you take a single subscription of Unacademy, that single subscription is for UPSC. That single subscription is not for a single subject. When you take subscription by using my code SKUS, you will get access to all subjects: polity, economy, history, geography, करंट अफेयर्स, ऑप्शनल कोर्सेज, साइंस टेक, एनवायरमेंट इको, इवन यूपीएससी की बैचेस जो चल रही है, प्लस गवर्नेंस, एथिक्स, एसे राइटिंग, इंटरव्यू प्रिपरेशन, इंटरनल सिक्योरिटी, सोसाइटी प्रैक्टिस, सीसैट, सोशल इश्यूज, आंसर राइटिंग, एवरीथिंग इज देयर। बस आपको करना क्या है कि सब्सक्रिप्शन लेते वक्त ये कोड यूज करना है, SKUS। क्लियर? After that, there are two types of subscription. One is Iconic and another is Plus. In case of Iconic subscription, the most important or biggest benefit of Iconic subscription is that in Iconic subscription you will get a personal mentor. Okay, and this personal mentor ensures that you are studying in a planned manner. वो आपको all sense से help करता है. Then whenever you are writing answers, तो आपके जो answer राइट किए आपने, मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है, वो आप डेली करवा सकते हो। मतलब आपको मेंस के आंसर लिखने हैं एंड दिस आंसर्स विल बी चेक्ड बाय द सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स थ्रू आइकॉनिक। दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल ओनली इन आइकॉनिक। फाइन, सो अ 12-month आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन विथ SKUS कोड 10% डिस्काउंट के बाद आपको कॉस्ट करेगा 57,600 एंड 24-month आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन विथ SKUS कोड जो कि 10% डिस्काउंट दिला देगा, आपको कॉस्ट करेगा 89,100 रुपीज। ओके, व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू से? शैलेंद्र कुमार, हेलो चर्चिका, मॉर्निंग सीनू एंड हाय गुड मॉर्निंग रमनदीप। Find a Plus subscription of 12 months instead of 44,000, it will cost you 39,600 again, because SKUS code will give you 10% discount. Morning Georgie, after long and a 24 months Plus subscription, instead of costing 64, it will cost you 57,600, because again SKUS code will give you 10% discount. Let's start our session. We discussed about NADA, WADA, NGT, then IOC, एवरीथिंग इज डिस्कस्ड। EPCA के बारे में डिस्कस किया, GRAP के बारे में डिस्कस किया। इवन आई आस्क्ड यू वन क्वेश्चन अबाउट GRAP, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। जो मैंने आपको पूछा था ना, वो ये था। देखिए, अगर आपके बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होगा ना, तो यहाँ पे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था, लेट मी सर्च। यस, बदरपुर। Shut down Badarpur power plant and maximize generation from natural gas based plants. This Badarpur power plant, it is a coal powered thermal power plant nearby Delhi. Even आपको बदरपुर नाम का एक मेट्रो स्टेशन भी मिलेगा दिल्ली में। ठीक है,
Clear? So this we discussed already about EPCA, then we discussed about NGT. उसके बाद हमने ये ट्रांस फैट एकदम प्रॉपर और डिटेल वे में डिस्कस किया था. आई होप. व्हाट इज फैट? कैन एनीबडी टेल मी? व्हाट इज ट्रांस फैट? कैन एनीबडी टेल मी? देन टाइप्स ऑफ ट्रांस फैट, एक होता है नेचुरल ट्रांस फैट होता है. कैन एनीबडी टेल मी व्हाट आर द सोर्सेज इन विच यू कैन फाइंड नेचुरल ट्रांस फैट? देन अनदर इज आर्टिफिशियल ट्रांस फैट. ओके, वेयर यू विल फाइंड आर्टिफिशियल ट्रांस फैट, ये भी आप मुझे बताइए. व्हाट आर द अदर नेम्स, मतलब आपको आर्टिफिशियल ट्रांस फैट के लिए हम दूसरी कौन कौन सी टर्म्स यूज करते हैं, ये भी आपको मुझे यहाँ पे बताना है. ठीक है? So I am waiting for your answer. Till that time I am going ahead. Normally artificial trans fat leads to the increased level of cholesterol and increased possibility of heart ailments. Fine. Then yes, fat के बारे में आपने देखा, fat is one of the example of nutrients. Then fat में ही lipids को, lipid is basically a fat as well as triglyceride is basically a fat. आफ्टर दैट हमने ट्रांस फैट देखा था, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. ट्रांस फैट के लिए हमने एक टर्म यूज की थी, कौन सी? दैट ट्रांस फैट्स दे आर एन एग्जांपल ऑफ अनसैचुरेटेड फैट. ट्रांस फैट इज एन एग्जांपल ऑफ अनसैचुरेटेड फैट. ओके, एंड दे फॉर्म नेचुरली, मतलब ये ट्रांस फैट एनिमल, हमने बोला ना कि ट्रांस फैट जो है मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स आर द सोर्सेस ऑफ ट्रांस फैट, ये मैंने आपको बोला था. तो ये जो नेचुरल ट्रांस फैट का सोर्स है मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट, ये वहां उनमें क्यों मिलती है? क्योंकि अलग अलग जो एनिमल्स है ना, उन एनिमल्स में आपके आपके उन एनिमल्स के स्टमक में ये ट्रांस फैट बैक्टीरियाज बनाते हैं. ठीक है? 2 to 6% आपको डेयरी प्रोडक्ट में मिलेंगे ट्रांस फैट एंड 3 to 9% इन बीफ एंड लैम. After that, yes, moderate intake of trans fat does not appear harmful, but yes, if you are eating extra trans fat, then it can cause a harm. Fine. Then हमने देखा था, आप लोगों ने बहुत अच्छे से आंसर दिया है गाइस, कि आर्टिफिशियल ट्रांस फैट के लिए टर्म यूज होती है इंडस्ट्रियल ट्रांस फैट. अनदर टर्म दैट इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल ट्रांस फैट इज हाइड्रोजनेटेड फैट्स and they are hazardous. Okay, and our vegetable oils, why they remain solid at room temperature? Because we add artificial trans fat into them, and that's why vegetable oil is not good for health. Eating vegetable oil is not at all good for your health. So remember this point for your health as well as your family's health. Now we are going to discuss about the cholesterol. Before we go ahead with the cholesterol, let's see what exactly it says about the trans fat. See, in series of clinical studies, people who consume trans fat, उनमें होता क्या है कि level of LDL cholesterol increases while level of HDL cholesterol do not increase. होता क्या है? When I am eating trans fat, तो in that case level of LDL cholesterol will increase, but the level of HDL cholesterol will not increase. Instead, suppose I am eating normal fat that is present in our food, not a trans fat, not natural trans fat, not artificial trans fat. मैं normal food eat कर रहा हूँ, उस केस में होता क्या है कि level of LDL will increase, along with that level of HDL will also increase. So when you eat normal fat, level of LDL and HDL cholesterol increases. But when you are eating only trans fat, in that case only level of LDL will increase and level of HDL will not. Now for your preliminary examination, what you need to remember, LDL cholesterol is known as bad cholesterol, and HDL cholesterol is known as good cholesterol. In this case, the long form of LDL is low density lipoprotein. This is the long form of LDL. Means देखिए, cholesterol is a lipoprotein, means it is a mixture of lipid, and we know from where we get lipid. Can anybody answer from where we get lipid plus protein? इन दोनों से क्या बन गया आपका? lipoprotein. So cholesterol contains lipid that is sourced from fat. It also contains proteins. protein सभी को पता है, तो lipoprotein. LDL is low density lipoprotein and HDL is high density lipoprotein. High density lipoprotein.
protein. These are the long forms of HDL and LDL. अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ why we call LDL a bad cholesterol, because it is sticky. As you already know, any oil is sticky, na? Oil is sticky. No, Ankita, lipid is for fat. Oil is sticky. So होता क्या है ना, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन में क्या होता है, लिपिड का परसेंटेज ज्यादा होता है और प्रोटीन का कम, इसलिए उसे लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कहते हैं. तो इट इज स्टिकी, दैट्स व्हाई इट इज बैड. एंड एचडीएल कोलेस्ट्रॉल इज नॉट that sticky. It is also sticky. HDL is also sticky, but it is not that sticky. So that's why it is a good cholesterol. अब इस slide से, from this slide, you need to remember only one thing. LDL is a bad cholesterol. HDL is a good cholesterol. That's it. From this slide, this much you need to remember. We are going to the next slide. Now, so when the level of LDL cholesterol increases, it can lead or it will increase the risk of heart disease. चलिए आगे, अब हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में. अब देखिए, अब तक आपको क्या क्या पता चला. नंबर 1, फैट, यू नो व्हाट इज फैट. नंबर 2, यू नो व्हाट इज ट्रांस फैट. नंबर 3, यू नो व्हाट इज नेचुरल ट्रांस फैट. नंबर 4, you know what is artificial trans fat. Number 5, you know which is a bad cholesterol. Number 6, you know which is a good cholesterol. And you also know why we are discussing all this, because 61% population in rural area do not have any idea about the harmful impact of trans fats, and this is a very worrisome condition. जैसे इवन अभी हमारे क्लास में अभी जितने बच्चे, इनमें से कितने लोगों को पता था कि ट्रांस फैट्स आर हार्मफुल? कितने लोगों को, जेन्युइनली बताइए. अभी आपको पता चल गया, बट आई गेस कि एटलीस्ट 50% स्टूडेंट को पता ही नहीं होगा कि ट्रांस फैट्स आर हार्मफुल. और अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया, तो आपको ये भी पता नहीं कि ट्रांस फैट कौन कौन से फूड प्रोडक्ट में है. मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट ये पता चल गया आपको, लेकिन विच अदर प्रोडक्ट्स हैव ट्रांस फैट, ये आपको अभी भी पता नहीं है, राइट? चलिए आगे. सो व्हाट इज कोलेस्ट्रॉल? कोलेस्ट्रॉल इज वैक्सी and a fat-like substance. Cholesterol is nothing but a lipoprotein. Cholesterol is nothing but a lipoprotein, means cholesterol is manufactured or produced by the mixing lipid and protein. इन दोनों को मिक्स करके क्या बनता है? कोलेस्ट्रॉल बनता है. फाइन. सो इट इज अ वैक्सी फैट-like substance. Now, where we need cholesterol? कोलेस्ट्रॉल इज नॉट ऑलवेज बैड. वी आर कॉलिंग ओनली एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बैड. उसका रीजन ये है बिकॉज वी नीड कोलेस्ट्रॉल. इट इज अ बायोमॉलिक्यूल. कोलेस्ट्रॉल इज अ बायोमॉलिक्यूल. विदाउट कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी के फंक्शन नॉर्मल नहीं हो सकते, प्रॉपर नहीं हो सकते. तो देखिए, यू नीड कोलेस्ट्रॉल फॉर द प्रोडक्शन और टू मेक हार्मोन्स. विदाउट कोलेस्ट्रॉल हार्मोन नहीं बन सकते. यू नीड कोलेस्ट्रॉल टू प्रिपेयर विटामिन डी. If you want to produce vitamin D from sunlight, you need cholesterol. Even we discussed this about in UV rays. We also discussed this about vitamin D. उसमें भी हमने देखा था कि without cholesterol vitamin D manufacture या produce नहीं हो सकता. Okay, clear, understood? So we need cholesterol to make hormones. We need cholesterol to produce vitamin D. As well as we need cholesterol for the production of substances that help you to digest food. Even you know, जो bile है ना, जो liver में बनता है, for the production of this bile which is used for the digestion of fat, उसे fat metabolism कहते हैं, या fat के digestion के लिए आप bile use करते हो, उसमें भी क्या होता है? cholesterol होता है. So cholesterol is a must biomolecule. Without cholesterol we cannot survive. But problem कहाँ आता है? Problem यहाँ आता है कि when the level of bad cholesterol increases, there is a problem. When the level of bad cholesterol increases, okay, then it is an essential structural component of animal cell membranes. It is an essential structural component of animal cell membrane. Not only animal cell membrane, आपके बॉडी में जितनी भी सेल्स है ना, इन सेल्स का जो मेम्ब्रेन है, जिसे आप सेल मेम्ब्रेन कहते हो या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हो, दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रोड्यूस्ड और यू नीड कोलेस्ट्रॉल टू प्रोड्यूस दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ कि विदाउट कोलेस्ट्रॉल सेल डिवीजन ही नहीं हो सकता.
विदाउट कोलेस्ट्रॉल सेल डिवीजन नहीं हो सकता. गुड मॉर्निंग सिकंदर. फाइन. नाउ वेयर वी कैन फाइंड कोलेस्ट्रॉल? तो कोलेस्ट्रॉल इज प्रेजेंट इन द egg yolk. Cholesterol is present in the meat. Cholesterol is present in the cheese. Okay, say cheese like that. ये चीज में भी कोलेस्ट्रॉल है. तो ये these are either animal products or they are dairy product. इनमें आपको कोलेस्ट्रॉल मिल रहा है. एंड कोलेस्ट्रॉल बनता किससे है? इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एज वेल एज प्रोटीन्स. इन दोनों से बनता है. और लिपिड किससे बनते हैं? लिपिड्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम द फैट. सो विदाउट फैट आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बन ही नहीं सकता. तो वी नीड फैट्स, बट प्रॉब्लम इज ट्रांस फैट. ओके, समझ में आया? अब इस स्लाइड से आपको क्या याद रखना था? व्हाट वेयर एग्जैक्टली कोलेस्ट्रॉल इज यूज्ड इन आवर बॉडी, या फिर एक कंसेप्ट समझनी थी यहाँ पे आपको, दैट कोलेस्ट्रॉल इज अ वेरी यूजफुल बायोमोलिक्यूल. Okay, we are going to the next slide. So when the level of cholesterol in our body becomes very high, or when it becomes excess, where particularly level of LDL cholesterol जब increase होती है, it leads to the formation of plaque. प्लैक क्या होता है? ये रहा आपका ब्लड वेसल. इवन आपको पता है ब्लड वेसल की इनर लाइनिंग में कोलेस्ट्रॉल होता है. बिकॉज कोलेस्ट्रॉल इज ऑयली, स्टिकी, सो ये क्या करता है आपके इसे एज ए लुब्रिकेंट एक्ट करता है. इट एक्ट्स एज ए लुब्रिकेंट, जिससे क्या होता है इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल डैमेज नहीं होती बिकॉज ऑफ द डिफरेंट थिंग्स प्रेजेंट इन द ब्लड. बट व्हेन a level of LDL cholesterol increases, so slowly this LDL cholesterol will start depositing inside on the inner lining of the blood vessel. और ये देखिए आपका LDL कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है. इसे कहते हैं प्लैक. तो इसे होता क्या है? तो स्लोली द ल्यूमेन और डायमीटर ऑफ द ब्लड वेसल क्या होने लगता है? रिड्यूस होने लगता है. ल्यूमेन और डायमीटर ऑफ द ब्लड वेसल विल रिड्यूस. ये है प्लैक फॉर्मेशन. एंड दिस प्लैक फॉर्मेशन हैपेंस व्हेन द LDL कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीजेस. Only when the level of LDL cholesterol increases. Very good morning, Khushbu Sinha. Okay, then when this plaque is formed now, because of the plaque formation, elasticity of blood vessels lose होती है. उसका रीजन भी एक है. देखिए ब्लड वेसल में जो रिसेप्टर्स है ना, जो हेल्प करते हैं ब्लड वेसल को अपना जो ल्यूमेन है वो एक्सपांड करना या कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, वॉल इलास्टिक होती है, लेकिन वो रिसेप्टर इस प्लैक के पीछे रह जाते हैं. रिसेप्टर यहाँ पे है, सामने प्लैक है. नाउ ब्लड इज इन कांटेक्ट विद द प्लैक, नॉट द रिसेप्टर. तो ब्रेन को मैसेज ही नहीं जाता. हिमांशु, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, हिमांशु श्रीवास्तव. समझ में आ रहा है बच्चों? सो इसकी वजह से होता क्या है कि इलास्टिसिटी ऑफ द ब्लड वेसल्स लूज होती है. उसी को हम कहते हैं अथेरोस्क्लेरोसिस. That is atherosclerosis, and atherosclerosis is the foremost reason for different heart diseases. Different heart diseases का main reason क्या है? atherosclerosis. Okay, we are going to the next point. Yes, LDL cholesterol, low density lipoprotein. HDL cholesterol, high density lipoprotein. And VLDL cholesterol, very low density lipoprotein. Very low density lipoprotein. Fine. So all HDL, LDL and VLDL, these are lipoproteins. Now you know what guys, if you have any Ramandeep, plaque is nothing but the deposition of bad cholesterol or LDL cholesterol or simple language में cholesterol on the inner lining of the blood vessel. उसे हम कहते हैं plaque. That is known as plaque. Fine. So अब यहाँ पे देखिए मैं आपको कोई चीज बता रहा हूँ कि LDL, HDL and VLDL, these are lipoproteins and lipids need to be attached to the protein so that they can move through the blood. So that's why they are lipoprotein. Not much important. Just remember, lipid cannot move independently through the blood. We are going to the next slide. Yes, HDL, high density lipoprotein. It is a good cholesterol and it is carried from body. HDL cholesterol is carried from body to liver. Okay, क्योंकि लीवर में क्या होता है, विटामिन डी मैन्युफैक्चरिंग में आपने देखा होगा, even liver is involved. Fine. Then in case of LDL cholesterol, it is low density lipoprotein. It is bad cholesterol because high level of LDL leads to plaque in your arteries. High LDL level leads to the plaque formation in your
arteries. This is LDL कोलेस्ट्रॉल एंड VLDL वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन. ऑब्वियस है, अगर ये वेरी लो है तो नेचुरल है. सिकंदर सिंह, लाइपोप्रोटीन इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन. लिपिड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दी फैट एंड फैट हमारे फूड में होता है. ठीक है, सो इट इज ऑल्सो अ बैड कोलेस्ट्रॉल. इट इज ऑल्सो अ बैड कोलेस्ट्रॉल and VLDL mainly carries triglycerides and LDL mainly carries cholesterol. That's it guys. So यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है, LDL bad cholesterol, VLDL bad cholesterol, HDL good cholesterol. That's it. यहाँ से इतना याद रखना है आपको. वेरी गुड मॉर्निंग आदित्य सिंह, वेरी गुड मॉर्निंग. ओके, चलिए आगे. सो वापस आ गए हम उसी न्यूज पे. दैट 61% रूरल कंज्यूमर्स अनअवेयर ऑफ ट्रांस फैट हैजार्ड सेज सर्वे. नाउ आई एम गोइंग टू आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस. इफ यू अंडरस्टूड दीज थिंग्स देन यू आर गुड. नंबर 1, डिड यू अंडरस्टूड व्हाट एग्जैक्टली फैट इज? सेकंड, डिड यू अंडरस्टूड व्हाट इज ट्रांस फैट? थर्ड, डिड यू अंडरस्टूड व्हाट इज कोलेस्ट्रॉल? फोर्थ, डिड यू अंडरस्टूड व्हाट इज गुड कोलेस्ट्रॉल? Fifth, did you understood what is bad cholesterol? Sixth, did you understood what is LDL cholesterol? Seventh, did you understood what is HDL cholesterol? Did you understood what is VLDL cholesterol? If you understood all these things, you are good. आपका एक भी क्वेश्चन बेसिक कंसेप्ट और बेसिक रीजंस बिहाइंड हार्ट डिसीजेस रॉन्ग नहीं जाएगा. Did you understood atherosclerosis? समझ में आया atherosclerosis क्या होता है? तो you are good. Fine. We are going to the next slide. तो ये basically this survey was conducted by the Consumer Unity and Trust Society और ये सर्वे कंडक्ट किया था 12 डिस्ट्रिक्ट्स इन राजस्थान. और इससे हमें पता चला कि 61% रूरल कंज्यूमर दे आर अनअवेयर ऑफ द ट्रांस फैट. We are going to the next slide. Okay, fine. Now you need to remember few fact. Again, this information which is in the red color, this is only important for your mains examination. This line, these two lines are very important for your mains answer writing. And while writing answer related to health, आपको ये भी लिखना जरूरी है. क्या है? WHO second progress report on global trans fat elimination. WHO is fighting hard to remove trans fats from our food. They are fighting very hard, okay, which had reminded India of its commitment to eliminate trans fat from food supply by 2022. India committed WHO that India will eliminate trans fat completely from the food by 2022. Okay, trans fat is nothing but a type of fat which is present in the dairy product, which is present in the meat, or which is present or added artificially into the vegetable oil. इन तीनों में trans fat present होता है, उसे हम trans fat कहते हैं. सीनो क्लियर? तो ये आपको किसके लिए याद रखना है? फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन दैट इंडिया कमिटेड WHO इंडिया विल रिमूव और कंप्लीटली एलिमिनेट ट्रांस फैट फ्रॉम द फूड बाय 2022. और अभी हमारे रूरल एरिया में 61% पॉपुलेशन को पता ही नहीं है ट्रांस फैट क्या है, उसके हैजार्ड्स क्या है. तो देयर इज वेरी लेस पॉसिबिलिटी कि पीपल विल स्टॉप ईटिंग ट्रांस फैट. वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट न्यूज. Now, next news is very interesting and very important. ये न्यूज क्या कहती है? DRDO ने सक्सेसफुली ASW मिसाइल सिस्टम टेस्ट की. ओके गाइस, इट कम्स अंडर SDG 2030 ऑल्सो. यस, जो गोल है ना हेल्थ वाला, उसमें सब कैटेगरीज में आएगा. मतलब जो गोल्स एंड टारगेट है ना, आई थिंक 17 गोल है और 163 टारगेट है SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में. तो वो जो 163 टारगेट्स है उसमें ये जरूर आएगा, एलिमिनेशन ऑफ ट्रांस फैट फ्रॉम दी फूड सप्लाई और फूड. फाइन. अब आते हैं हम मिसाइल्स पे. ओके, वन थिंग यू नीड टू राइट इट डाउन. ओके, मैं जो बता रहा हूं ये आपको प्रॉपरली नोट डाउन करना है. दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ प्रीलिम 2021. ये आपको 2021 के प्रीलिम्स में बिल्कुल पूछा जाएगा. सो लिसन टू ईच एंड एवरी फैक्ट दैट आई एम शेयरिंग यू राइट नाउ वेरी केयरफुली. पहले तो अंडरस्टैंड कीजिए, देन आप रिवीजन के लिए इसे साइड में रख सकते हो. नंबर 1,
What is ASWO? It is anti submarine warfare. What is ASWO? ASW anti submarine warfare. फाइन. और हमने क्या टेस्ट किया? व्हाट एग्जैक्टली DRDO सक्सेसफुली टेस्टेड? इट सक्सेसफुली टेस्टेड ASW missile system. Means DRDO successfully tested the missiles that can be used in anti-submarine warfare. Hello Rinku Patidar. Clear? पहला point, that recently DRDO tested missiles which can be used in anti-submarine warfare. ये पहला पॉइंट हो गया. दूसरा आपको जो यहां याद रखना है वो ये है कि एंटी सबमरीन टॉर्पीडो सिस्टम. हियर यू नीड टू रिमेंबर वन फैक्ट. व्हाट इज टॉर्पीडो? टॉर्पीडोज आर नथिंग बट द systems that carry missile. Torpedoes are nothing but the systems that carry missile, but कहाँ carry करते? That carry missile through water. So torpedoes are the missile delivery system, or and missile itself is a weapon delivery system. So without torpedo technology, you cannot launch a missile underwater or in a submarine warfare. Okay. Peddapulani, Balaya Peddapulani, hi. Clear guys? So what we did, DRDO tested a missile, or in short, anti-submarine torpedo system for anti-submarine warfare. And what it is SMART. The name of that missile or name of that system which will be used as in ASWO, or which will be used as anti-submarine missile. सर एंटी सबमरीन का क्या मतलब? हिमांशु, डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट इज सबमरीन? जैसे शिप होती है ना विच फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, इन द सेम वे देयर आर सम शिप्स विच ट्रैवल अंडर वाटर लाइक अ फिश. तो उन शिप्स को जो पूरी क्लोज्ड होती है उन्हें हम सबमरीन कहते हैं. सो व्हेन वी आर यूजिंग मिसाइल्स टू डिस्ट्रॉय सबमरीन, तो उस मिसाइल को हम क्या कहेंगे? एंटी सबमरीन मिसाइल. क्लियर? एंड इफ वी आर यूजिंग दैट मिसाइल टू डिस्ट्रॉय सबमरीन, तो हम उसे क्या कहेंगे? एंटी सबमरीन वॉरफेयर. दैट मिसाइल विल बी यूज्ड इन एंटी सबमरीन वॉरफेयर. सो बेसिकली द एक्चुअल नेम of the missile that was tested by DRDO, which can be used in ASW or anti-submarine warfare, the name is SMART. Now what is SMART? S for supersonic, S for supersonic, M for missile, S for supersonic, M for missile, A for assisted, supersonic missile assisted, R for release, and T for torpedo. So here if you can observe, it is basically a torpedo, okay, but it is also a missile, because without torpedo you cannot use missile against a submarine. So it is a torpedo, it is a missile, but it is supersonic. It is supersonic. So supersonic missile assisted release torpedo. So this torpedo will be released with the assistance of missile, and it is supersonic. That's why SMART. Clear? यहाँ पे मैंने आपको दो तीन कंसेप्ट बताई. आई टोल्ड यू व्हाट इज ASW, एंटी सबमरीन वॉरफेयर. आई टोल्ड यू व्हाट इज टॉर्पेडो. सॉरी, I told you what is torpedo. I hope you understood. Then I told you what exactly SMART is. You need to remember the SMART. It is very, 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 very important for your prelims 2021. Next point जो मुझे आपको यहाँ पे explain करना है वो ये है. Please tell me the how many types of submarine we use on the basis of source of energy used by submarine. Source of energy used by submarine. On this basis, how many, what is the classification of submarine? So I am waiting for your answer guys. Okay, please answer. Let's see how many of you remember, because we discussed this in our Rise to session, and those students who never attended my previous session, you need not worry, everything will be covered. But I will explain submarines in detail, don't worry about that. Okay, clear? चलिए मुझे बताइए quickly. I am waiting for your answer guys. No, there are only two types. सौमिक, दो तरीके की है.
एक होती है, नंबर 1 इज न्यूक्लियर powered submarine. Can anybody tell me the names of nuclear powered submarine of India? This is one, and very good, Kapil. And the second is diesel electric submarine. Diesel electric submarine. Okay, so that solar part, we are using solar as a source of energy in ships. We cannot use solar in submarine because the main objective of submarine is to remain underwater, and if you are using solar, that submarine need to resurface ना, तो उसका कोई यूज ही नहीं है. So solar is not आंसर. ओके, देयर आर ओनली दो टाइप की है, आपको मैंने ऑलरेडी पूछा है. प्लीज टेल मी द नेम्स ऑफ द सबमरीन्स व्हिच आर न्यूक्लियर पावर्ड इंडिया की. एक है INS चक्रा, दिस इज अ न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, एंड सेकंड इज INS अरिहंत अगेन विच इज अ न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन. और कपिल, आपने जो अरिघात कहा है ना, दैट इज नॉट इट कमीशन अंडर sea trial hai. Arighat is under sea trial. So these are the two operational nuclear powered submarine of India, one under sea trial. And in case of diesel electric submarine, हमने 3 क्लास देखे थे. We discussed 3 classes in case of diesel electric submarine. First is Shishumar class. Shishumar class. Okay. Second is सिंधु समथिंग था, मुझे अब वो याद, सिंधु राष्ट्र, सिंधु विजय, सिंधु ध्वज, ये अलग अलग नाम थे. पहले सबमरीन का नाम मुझे याद नहीं आ रहा. सिंधु समथिंग ये क्लास. एंड द थर्ड इज कलावरी क्लास, कलवरी का क्लास सबमरीन. और इसी कलवरी की केस में हमने क्या डिस्कस किया था, प्रोजेक्ट 75 वी डिस्कस्ड. So this ASW or this smart missile will be used by these submarines for anti-submarine warfare. Nilesh Nayak, best book for science and technology is in front of you. This one. मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ ना, that is the best. There is no book in the market which will cover everything of your science tech, क्योंकि science tech के क्वेश्चन स्टैटिक से बहुत कम आते हैं, सारे आते हैं करंट अफेयर से. और बुक सिर्फ स्टैटिक हो सकता है, उसमें करंट अफेयर बिल्कुल नहीं हो सकते या ऐड नहीं कर सकते, तो उसका कोई यूज नहीं होगा अगर आप बुक लेते भी हो. मैं ही खुद प्लान कर रहा हूँ टू लॉन्च अ बुक ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर UPSC 2021. ये अभी मेरे दिमाग में आया, जैसे आपने कहा, आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट. ओके कपिल, सॉरी Nilesh, got it guys? So I hope you understood SMART. It is a supersonic missile assisted release of Torpedo. Supersonic missile assisted release of Torpedo, SMART. We are going to the next slide. Now see, SMART is, see, when you launch SMART from a warship or a truck based coastal battery, see, you are not launching SMART from a submarine. Sindhu Ghosh, thank you very much Kapil. You are not launching SMART from a submarine. You are launching SMART from a truck, that is coastal area में surface से इसे आप launch कर रहे हो. Okay, okay. और you are launching a SMART from a warship. आप warship से भी launch कर रहे हो क्या SMARट. On YouTube only Sonal, YouTube पे ही राइट सेशन मेरा. समझ में आ रहा है? पहला पॉइंट समझे आप? स्मार्ट के बारे में याद रखिए. यस सर, इन दिस ईयर प्री का मैक्सिमम क्वेश्चन केम फ्रॉम योर लेक्चर्स. थैंक यू खुशबू. यस आई नो, देयर आर एटलीस्ट मोर देन 250 मैसेजेस टू मी थ्रू व्हाट्सएप एंड मेनी कमेंट्स ऑन यूट्यूब एंड ऑन माय Unacademy classes that yes, there are many questions from my sessions. So I am going to assure you, आप सिर्फ मुझे 1 साल फॉलो कीजिए, आपका प्री निकल जाएगा सिर्फ मेरे सेशन से, बाकी कुछ भी नहीं करना है लिटरली, क्योंकि आप नॉर्मल सा हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी तो पढ़ ही लोगे ना. सो और आपने अगर देखा होगा 28 क्वेश्चन थे साइंस टेक एंड एनवायरमेंट को, सिर्फ 2 टॉपिक के 28 क्वेश्चन थे. और एग्रीकल्चर उसमें ऐड कर दोगे तो कुछ 12 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के थे, मतलब 40 क्वेश्चन एग्रीकल्चर, साइंस टेक, एनवायरमेंट को इनसे आते थे. ठीक है, चलिए. सो पहला पॉइंट यहाँ पे आपको याद रखना है, स्मार्ट. Smart, I will be either launched from a ship, not from submarine. It is very, very crucial. Smart will not be launched from submarine, but it will be launched to destroy submarine. So it will be launched from a warship or it will be launched from a truck-based coastal battery.
कोस्टल रीजन। अब ये टेक ऑफ करेगा लाइक अ रेगुलर सुपरसोनिक मिसाइल। स्मार्ट विल टेक ऑफ लाइक अ रेगुलर सुपरसोनिक मिसाइल, जैसे कि ब्रह्मोस है। ओके, नाउ इट विल कवर मोस्ट ऑफ इट्स फ्लाइट, most of the flight of this smart will be in the air but at lower altitude. So basically smart is a cruise missile because बैलिस्टिक मिसाइल बहुत हाइट पे जाती है। सर आपका रोज होता है क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लास? यस हिमांशु, एवरी डे 11:15 AM ऑन यूट्यूब एंड एवरी डे 8 AM ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप। ओके, क्लियर? सो इट इज अ क्रूज मिसाइल, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल तो पूरा बैलिस्टिक प्रोजेक्टाइल पाथ क्रॉस करके अपर एटमॉस्फेयर में जाएगी। ओके, clear? So it is this smart will take off like a regular supersonic missile. It will cover most of its flight in air at lower altitudes. That's why it is a cruise missile with two-way data link. Two-way data link means it is connected to internet, and through internet it is connected to the ground station that will regulate or control this missile. Okay, two-way data link from the warship or an airborne submarine टारगेट डिटेक्शन सिस्टम। मतलब यहाँ पे सपोज ये आपकी वॉरशिप है, यहाँ से क्या किया हमने, ये स्मार्ट लॉन्च कर दिया, प्लस ये जो आपका सैटेलाइट है, दिस सैटेलाइट इज यूज्ड टू डिटेक्ट सबमरीन, और ये रही आपका स्मार्ट, दिस इज योर स्मार्ट। ओके, ये रहा आपका स्मार्ट। तो ये स्मार्ट इससे भी कनेक्टेड है और इससे भी कनेक्टेड है, टू वे डाटा लिंक, एंड दिस स्मार्ट इज ट्रैवलिंग इन एयर लाइक अ क्रूज मिसाइल मोस्ट ऑफ द पाथ एट लो अल्टीट्यूड, मोस्ट ऑफ द पाथ एट लो अल्टीट्यूड। फाइन, इट प्रोवाइड्स एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द होस्टाइल सबमरीन, और सपोज ये है आपकी सबमरीन और ये है आपका वाटर। सो इससे होता क्या है, दिस anti-airborne submarine target detection will provide exact location to this missile. Okay, and this missile will then enter into the water and it will destroy submarine. Okay, समझ में आया स्मार्ट का? So it is basically it is launched from a warship or a coastal truck and it will be used to destroy submarine. That's why we say कि smart will be used in anti-submarine warfare which is recently tested by DRDO. यहाँ पे एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट आपको याद रखना है, it is launched from surface or from ship. It is not launched from a submarine, though it is used to destroy a submarine. If there is even an iota of doubt, please ask me. I hope everything is crystal clear. एंड अभी से आपको एक क्या करना है, एक सेपरेट पेज बना के रखना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कंसेप्ट फॉर प्रीलिम 2021, और उसमें लिख लीजिए, ये मैं सब मोस्ट प्रोबेबल बता रहा हूँ, प्रीलिम 2021 के लिस्ट में लिख लीजिए स्मार्ट, दिस इज योर क्वेश्चन, सॉरी, ये आप उसमें नोट डाउन कर लीजिए, स्मार्ट, दिस इज फॉर योर प्रीलिम 2021। आपको लिखना कुछ भी नहीं है उसमें, सिर्फ स्मार्ट ये नाम लिखना है, नोट्स आपको यहाँ मिल जाएगी पीडीएफ में। देन वी आर गोइंग नेक्स्ट। ओके, नाउ व्हाट इज टॉर्पेडो? इट इज अ cigar shaped self propelled, it is very important, it is self propelled underwater weapon. So it is a weapon which is used underwater, it is self propelled, it is cigar shaped and it is launched from submarine. But smart is launched from a warship or a truck. Smart is launched from a warship or a truck. Instead, torpedo is launched from a submarine. Okay, or it can be launched from a surface vessel, or it can be launched from a airplane. But smart will not be launched from a submarine. It will be launched from a truck or a warship. Okay, and it is designed for exploding upon contact with the hulls of surface vessel or submarine. Okay, Varunastra जो है ना, it is the first indigenous heavyweight ship launched anti-submarine electric torpedo. याद रखिए, what is Varunastra? वो आपका रामायण महाभारत वाला वरुणास्त्र, नागास्त्र, ब्रह्मास्त्र, अग्निअस्त्र वो नहीं है, ये जो है आपका ये वरुण अस्त्र। इसमें जो आपको प्रीलिम्स के लिए पॉइंट याद रखने हैं वो ये, नंबर 1 पॉइंट, इट इज अ anti-submarine electric torpedo. What is Arunastra? It is an anti-submarine electric torpedo. This is first point. And second point you need to remember about Varunastra is it is first
indigenously developed. It is first indigenously developed. So this is again very important. See guys, Varunastra, it will not be in news frequently. This smart can be in news frequently. Possibility है कि smart will be in the news frequently. Okay, is smart is similar to GSLV or PSLV like launch system? No, not at all, Sikandar. It is similar to BrahMos missile. Smart is similar to BrahMos missile. Okay, clear? वरुणास्त्रा, इसे आप रेगुलरली रिवाइज करोगे फॉर योर प्रीलिम्स, और मैं ट्राई करूंगा कि इसे मैं आपको भूलने ना दूं. ओके, वरुणास्त्रा में भूलने नहीं दूंगा आपको. आगे चलते. सो बेसिकली दिस इज टॉर्पीडो. दिस इज द टॉर्पीडो, cigar shaped underwater weapon launched from a submarine or a warship or a aeroplane which travels underwater, and जब ये इसकी कांटेक्ट में आएगा ना सबमरीन के, it will explode. So I hope you understood this news properly. DRDO successfully test ASW missile system. Understood? Then supersonic missile assisted release of torpedo. Understood? चलिए आगे. ये रहा आपका अभी 7 अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर हम डिस्कस करेंगे. अभी तक हमने डिस्कस किए 6 अक्टूबर 2020 के. वी नीड टू कवर मेनी थिंग्स. बहुत पीछे चल रहे हैं ना हम. आज हम सिर्फ 7 अक्टूबर पे हैं, तो we need to cover things quickly. Just give me a minute guys. There are so many students inquiring about the plus and iconic, and they are like very eager. I need to reply sometime. Okay, fine. चलिए, we are going to the 7th October current affair. The first news that is important in your 7th October is, ये फ्रंट पेज पे ही थी एक. अगर आपने द हिंदू पढ़ा होगा दिल्ली एडिशन, तो उसमें आपने देखा होगा इट इज 7th अक्टूबर 2020 के फ्रंट पेज पे थी. हिमांशु, क्लास के एंड में मैं बता दूंगा, फिर भी आपके लिए ये देख लीजिए. एक बार मैं शो करता हूँ, लेकिन ये इमेज देखकर आप ये मत सोचिए कि क्लास खत्म हो गया. नो 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 नो, बहुत कुछ है क्लास में. तो क्लास इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला. हमारा 12:15 तक तो एट एनी कॉस्ट चलेगा ही. मरीन ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आया तो टॉर्पीडो, नो, इट विल नॉट एक्सप्लोड इफ इट कम इन कांटेक्ट विथ मरीन ऑर्गेनिज्म. ये सबमरीन के हल के कांटेक्ट में आने के बाद ही एक्सप्लोड होगा. चर्चिका. दिस इज माय टेलीग्राम चैनल हिमांशु श्रीवास्तव t.me/Sachin_Kadam1, और आपको शेयर किया खुशबू सिन्हा ने @Sachin_Kadam1. मेरा एम ही है मैं भी नंबर 1 रहूं और मेरे स्टूडेंट भी नंबर 1 रहे. ठीक है, चलिए अब हम आते हैं न्यूज पे. सो बेसिकली देयर वाज न्यूज दैट 3 black hole researchers who were working on the black holes, they got Nobel Prize for Physics of 2020. ये न्यूज थी. तो यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है, ब्लैक होल इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सोटिक फेनोमेनॉन इन द यूनिवर्स. It is an exotic phenomenon in the universe, and those who are working on the black hole, ऐसे 3 रिसर्चर्स को 2020 का फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला है. जैसे केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला है क्रिस्पर टेक्नोलॉजी जिन्होंने इन्वेंट की, और हमने क्रिस्पर डिस्कस की थी. उसके बाद मेडिसिन का मिला है हेपेटाइटिस सी वायरस को इन्वेंट करने के लिए, दो साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड द एग्जिस्टेंस ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस. ये हमने रिसेंटली डिस्कस किया करंट अफेयर्स में ही, राइट. सो चलिए आगे. Now you need to know what is black hole. Now whatever I am going to explain, those students who are in my class for the first time, or those students who are completely unaware about white dwarf, neutron star and black hole, please listen to this very carefully. It is a very 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 simple concept. प्रॉब्लम ये है कि हमने कभी उसे देखा ही नहीं था, सुना ही नहीं था. That's why we feel it is very difficult. It is very very simple guys. So see, हर एक स्टार की जो लाइफ है ना, लाइफ ऑफ एवरी स्टार स्टार्ट्स विद दिस. वी कॉल दिस स्टेलर नेबुला. व्हाई वी कॉल दिस स्टेलर? बिकॉज इट इज स्टार, दैट्स व्हाई स्टेलर. और अगर ये प्लैनेट है तो उसे कहते हैं प्लैनेटरी नेबुला. सो लीव इट, हम प्लैनेटरी नेबुला को बाद में डिस्कस करेंगे. सो लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार स्टार्ट्स विथ स्टेलर नेबुला.
गोविंद मिश्रा, मेरा जो सेशन है, मेरी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेशंस है वो होते हैं एवरीडे 8 AM ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप एंड एवरीडे 11:15 AM ऑन यूट्यूब। ये मेरे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेशंस है, मैंने आपको बता दिया टाइम टेबल। फाइन। सो लाइफ ऑफ अ स्टार स्टार्ट्स विद अ स्टेलर नेबुला। नाउ व्हाट इज स्टेलर नेबुला? इट इज अ प्रोटोस्टार। Proto का सब I hope everybody knows it is not actually a star, that's why protostar. So it is a protostar. Okay, it is a protostar composed of dust cloud. What is present in the stellar nebula? You will find dust clouds in stellar nebula, and in this stage the star is trying to achieve equilibrium between the gravity, the pressure and the core and the temperature. सो स्टेलर नेबुला जो है, एक एक बात मैं आपको बताता हूँ, बहुत केयरफुली सुनिए। सो स्टेलर नेबुला इज अ प्रोटोस्टार। ओके, सेकेंड, स्टेलर नेबुला इट इज अ मेड अप ऑफ डस्ट क्लाउड ऑफ डस्ट है। ओके, थर्ड, what this stellar nebula is trying to do, it is trying to achieve equilibrium. Stellar nebula is trying to achieve equilibrium in what? Equilibrium in temperature, equilibrium in pressure, equilibrium in, यहाँ आप देख लीजिए, core and gravity, equilibrium in core, equilibrium in gravity. So the main aim of stellar nebula to achieve is to achieve the equilibrium between temperature, pressure, core and gravity. ओके, इक्विलिब्रियम, टेम्परेचर, प्रेशर, कोर एंड ग्रेविटी, इनमें इक्विलिब्रियम अचीव करना, ये एम है स्टेलर नेबुला का। क्लियर? स्टेलर नेबुला क्लियर हो गया? व्हाट इज स्टेलर नेबुला? इट इज अ प्रोटोस्टार। स्टेलर नेबुला इज मेड अप ऑफ डस्ट क्लाउड। व्हाट स्टेलर नेबुला इज ट्राइंग टू अचीव? टेम्परेचर, प्रेशर, कोर एंड ग्रेविटी। Okay, the way you guys are trying to achieve your dream to become an IAS officer, everything in the universe is trying to do something, good or bad. Everything in the universe is trying to achieve something, good or bad. जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, you are in this session right now because you are trying to achieve your aim to master science and technology. There are some students in this class only, we experience them, they enter into this class to achieve disturbance. हमारे क्लास को डिस्टर्ब करने के लिए भी कोई आते हैं लाइव चैट में, फिर हम उनको ब्लॉक कर देते हैं। सो एवरीवन इज ट्राइंग टू अचीव समथिंग। दिस स्टेलर नेबुला इज ट्राइंग टू अचीव इक्विलिब्रियम। इट इज ट्राइंग टू अचीव इक्विलिब्रियम in temperature, in pressure, in core and in gravity. Gurlinkor, you will get these PPTs in PDF format on my Telegram channel. The link of that Telegram channel already shared by Khushbu Sinha in the chat, or you will get the link of that Telegram channel at the end of my session. So guys, I hope now if I say stellar nebula, you know what it is. कितने लोगों को द मोमेंट आई से स्टेलर नेबुला ऐसी फीलिंग आती है कि वाओ आई नो दिस? व्हेन आई से स्टेलर नेबुला, हाउ मेनी ऑफ यू फील कि यस सर वी नो स्टेलर नेबुला, वी नो व्हाट इज स्टेलर नेबुला? और अब आने तो स्टेलर नेबुला पे क्वेश्चन, यूपीएससी को पूछनी ही तो स्टेलर नेबुला पे क्वेश्चन। जितने बच्चों ने अभी मेरा सेशन अटेंड किया या जो भी रिकॉर्डेड देखेंगे जिसमें स्टेलर नेबुला डिस्कस करूंगा, ऐसे मिल जाएगा आपको आंसर स्टेलर नेबुला का। देखिए स्टेलर नेबुला पढ़ते वक्त बहुत बड़ा लगता है, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है। इट इज नॉट, सिंपल है, प्रोटोस्टार मेड अप ऑफ डस्ट क्लाउड, दैट्स इट। चलिए बताइए जल्दी कितने लोगों को स्टेलर नेबुला समझ में आया, सो दैट आई विल गो अहेड। डेबिट कार्ड इज ऑल्सो आस्किंग फॉर टेलीग्राम चैनल। गाइज, आई शेयर माई टेलीग्राम चैनल एट द एंड ऑफ द सेशन। तो आपको अगर टेलीग्राम चैनल की लिंक चाहिए तो यू नीड टू स्टे टिल द एट द एंड ऑफ द सेशन, देन ओनली यू विल गेट द, निधि श्रीवास्तवा, दैट विल बी ऑन द वे। हम सीधा ब्लैक होल में नहीं कूदेंगे, पहले हम थोड़ी तैयारी करेंगे ताकि हम ब्लैक होल में इजीली जा सके और उस ब्लैक होल को अच्छे से समझ सके। तैयारी कर लेते हैं ना पहले, ठीक है? हाँ चलिए, अब स्टेलर नेबुला के बाद, सी दिस स्टेलर नेबुला हैज मास, दिस स्टेलर नेबुला हैज मास। और जब स्टेलर नेबुला को मास है
इसका मास अगर सपोज द मास ऑफ आवर सन इज 1 यूनिट, आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल. If mass of our sun is 1 unit and the mass of this stellar nebula is 2 unit, so this stellar nebula will convert into massive star. Listen to this very very carefully. If the mass of this stellar nebula is 2 unit, that is double the mass of our sun, then this stellar nebula will convert into massive star. If mass of this stellar nebula is, just a minute, if the mass of our sun is 1 unit and mass of this stellar nebula is 1.3 units of the mass of our sun, तो ये stellar nebula will convert into average star. So it depends कि whether the mass of the stellar nebula is less than the 1.4 times the mass of our sun. It's very simple. मुझे तो अंदर से ऐसी खुशी हो रही है, कितने सिंपल टर्म्स में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. एस्ट्रोनॉमी, स्पेस. देखिए, if the mass of this stellar nebula is less than the 1.4 times the mass, 1.4 times the mass of our sun, this stellar nebula will become average star. If the mass of this stellar nebula is more than, just a minute, if the mass of this stellar nebula is more than 1.4 times the mass of our sun, this stellar nebula will convert into a massive star. It's this simple. तो ये जो 1.4 times the mass of our sun है ना, ये लिमिट हो गई ना. If mass of that particular celestial body or particularly stellar nebula is less than the 1.4 times, so it will become average star. If it is more than the 1.4 times the mass of the sun, it will become massive star. तो ये जो लिमिट है ना, ये किसने बताई है, आपको पता है? The limit 1.4 times the mass of our sun, this limit is given by Subramaniam Chandrasekhar, Indian scientist. Wow. And that's why we call this Chandrasekhar limit. That's why we call this Chandrasekhar limit. अब मैं एक स्टेटमेंट करने जा रहा हूं. I hope you will understand this statement. If the mass of a stellar nebula is less than Chandrasekhar limit, it will become average star. If the mass of stellar nebula is more than Chandrasekhar limit, it will become massive star. This statement is correct or wrong? आप लोग आंसर बताओगे. आप लोग आंसर बताओगे, जल्दी से बता दीजिए. ये चंद्रशेखर लिमिट बड़े बड़े साइंटिस्ट को समझने में डिफिकल्टी होती है, आज आपको वो समझ में आ गई. इतने सिंपल फॉर्म में मैंने बता दिया. ठीक है, क्लियर. अब हम आगे जाते हैं थोड़ा, और एक क्वेश्चन मैं यहीं पे पूछने जा रहा हूं. प्लीज टेल मी, आवर सन इज अ एवरेज स्टार और मैसिव स्टार? आवर सन दैट शाइन्स फ्रॉम द स्काई ऑन आवर अर्थ इज अ मैसिव स्टार और अ एवरेज स्टार? क्विकली बता दीजिए. वेरी गुड कपिल, सिकंदर, सोनल, चर्चिका, रमनदीप, अंजू. देखिए, आप लोग इतने सारे लोग कह रहे हो ना करेक्ट, इट मीन्स कि आप लोगों को समझ में आ गया. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को ये चीज समझ में आ गई है. दैट इज वेरी गुड, वेरी वेरी गुड. मैंने तो और एक क्वेश्चन पूछा है. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर गाइज. वेरी गुड गाइज. इट इज अ एवरेज स्टार. उसका रीजन क्या है? हमारे सन का जो मास है वो खुद के मास से 1.4 टाइम्स है क्या? नहीं. आवर सन्स मास इज 1 यूनिट. लेकिन to call any star massive star, mass of that star should be more than 1.4 times the mass of sun. Okay, no Ramandeep, it is a average star. What if it is equal to Chandrasekhar limit? Akshay Kumar, it is very difficult. Even Chandrasekhar limit is a approximation.
Akshay Kumar, Chandrasekhar limit in itself it is an approximation. No one knows the exact mass of our sun as well as Chandrasekhar limit. तो इसलिए it is less or more only, not exact. ये theoretical question हुआ आपका, ठीक है? Clear? Sir, is it be clear in PDF what's written in life cycle of stars? Yes, it will be clear, and if it is not, please let me know. I will I will convert this into PDF and then give it to you. So चलिए अब हम जाते हैं, पहले हम क्या करते हैं, हमारी खुद के सन की लाइफ साइकिल स्टडी कर लेते हैं ना. So this is stellar nebula some 1,000 billion years ago, and it became average star because the mass of that stellar nebula was less than Chandrasekhar limit. This average star after achieving equilibrium, देखिए व्हाट इज द, फिर से एक बार क्विक, स्टेलर नेबुला इज अ स्टेलर, व्हाट इज स्टेलर नेबुला, इट इज अ प्रोटोस्टार. स्टेलर नेबुला इज अ प्रोटोस्टार प्लस स्टेलर नेबुला इज अ क्लाउड ऑफ डस्ट. It is a cloud of dust. Yes, debit card, I can see that, and I am very happy that you are understanding what I am explaining. That is a very मतलब satisfactory feeling for an educator like me कि एक नया student है और उसे समझ में आ रहा है. Okay, so it is a cloud of dust. Then stellar nebula is trying to achieve equilibrium in pressure, equilibrium in temperature, equilibrium in gravity, and equilibrium in what? Fourth बताइए. Equilibrium in gravity core. So once this stellar nebula achieves this equilibrium, like once you achieve your dream to crack UPSC with good and flying colors, you will become an IAS officer. उसी तरह ये stellar nebula जो है ना, it is a UPSC aspirant. ये क्या है? UPSC aspirant है, ठीक है. And now this UPSC aspirant और stellar nebula is trying to achieve equilibrium. जैसे ही equilibrium achieve हुआ, stellar nebula converted into star, और हम यहाँ कह रहे हैं average star. Like an UPSC aspirant converts into an IAS or IPS officer. हाँ, डेबिट कार्ड, माई क्लासेस आर एवरी डे 11:15 AM यूट्यूब पे एंड एवरी डे 8 AM अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे, ठीक है. सो इक्विलिब्रियम अचीव करने के बाद ये क्या बन गया? स्टार. नाउ अब आप मुझे बताओगे व्हाट हैपेंस इन स्टार. What happens in star? In star, fusion takes place, and because of this fusion, star emits enormous amount of energy. This we already discussed in the structure of sun, और future में भी हम डिस्कस करेंगे, अभी नहीं, लेकिन ना enormous energy ये emit करता है स्टार. ओके, ये enormous energy emit करता है. चलिए आगे. सो मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ, वंस इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड बाय द स्टेलर नेबुला, इट विल कन्वर्ट इनटू अ स्टार, एंड नाउ दिस स्टार विल begin burning up its supply of hydrogen and helium through nuclear fusion. So this star will start burning. This star will start burning hydrogen present inside the core, and this hydrogen will convert into helium, and in the process enormous amount of energy will be released, and this helium will again convert into hydrogen. ये प्रोसेस चलता रहेगा. It will go ahead, keep going on. Okay, हेलो दिनेश स्वामी जी, कैसे हो आप और कहाँ से हो आप? That's what I am explaining now, Vaishali. The life cycle of a star starts with stellar nebula, then this stellar nebula converts into average star, and this average star, after burning the hydrogen present in the core of this star, will convert into a red giant. जब कोई भी स्टार रेड जायंट में कन्वर्ट होता है, लाइफ स्पैन वैशाली इट इज लाइक बिलियंस ऑफ बिलियन ईयर्स है. लाइफ स्पैन बिलियंस एंड बिलियन ईयर्स है वैशाली यम. फाइन. सो स्टेलर नेबुला से एवरेज स्टार बना, एवरेज स्टार से रेड जायंट बना. रेड जायंट ये कब बनता है? व्हेन द फ्यूल इन द कोर एग्जॉस्ट, मतलब फ्यूल सप्लाई जब उसका एग्जॉस्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है ना स्टार का, तब ये किस में कन्वर्ट होता है? रेड जायंट में. सो राइट नाउ आवर सन इज अ स्टार, but maybe after some 1,000 billion years
our sun will convert into a red giant. Our sun will convert into a red giant, and then because this red giant do not have supply of hydrogen, so it stop emitting एनर्जी, प्लस इसका ये एक्सपांड भी होता है, तो इसका जो डायमीटर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। रेड जायंट का डायमीटर स्टार के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। एंड देन दिस रेड जायंट कन्वर्ट्स इनटू प्लैनेटरी nebula. What is planetary nebula? This stage of the star has no energy left and begins losing layers and forms a complex structure. So slowly ये अपने layers lose करने लगता है, क्योंकि इसके पास ना एनर्जी है और ना ही मास है, और अल्टीमेटली ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? इट कन्वर्ट्स इनटू अ व्हाइट ड्वार्फ। ये एक लाइफ साइकिल मैंने आपकी शॉर्ट में कंप्लीट कर दी। तो लाइफ ऑफ अ स्टार स्टार्ट्स विद स्टेलर नेबुला। Okay, it starts with stellar nebula. This stellar nebula, if the mass of stellar nebula is less than Chandrasekhar limit, it will convert into a average star. Average star will burn fuel present into its core, that is hydrogen, into helium, and it will release enormous amount of energy. जैसे ही इस average star के core में जो भी fuel का supply है वो खत्म हो जाता है, so this average star will convert into a red giant. Now red giant is a large star without fusion, or because fusion नहीं हो रहा, तो this red giant will convert into planetary nebula, and it is a average star, इसलिए this planetary nebula will convert into white dwarf. तो आपको एक life cycle पता चल गई. This is the life cycle of our sun. Our sun was stellar nebula initially, now it is an average star. In future it will become a red giant, then it will become a planetary nebula, and at the end it will convert into white dwarf. कितने लोगों ने white dwarf नाम नहीं सुना था? अब याद रखिए, white dwarf is the end product of a star's life cycle. White dwarf is the end product of a star's life cycle. Clear? ये एक लाइफ साइकिल क्लियर होगी। जो सेकेंड लाइफ साइकिल है दैट वी विल डिस्कस टुमारो। आज के लिए इतना ही काफी है। अगर आप लोगों को सब कुछ समझ में आया है तो प्लीज से यस इन द कमेंट बॉक्स, और अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो यू कैन आस्क मी योर डाउट्स, आई एम हियर ओनली। ओके, मैं यहीं पे हूं, आप बस मुझे आपके डाउट पूछिए। अब जो नए स्टूडेंट है उनके लिए दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, यू नीड टू सब्सक्राइब टू दिस टेलीग्राम चैनल टू गेट एक्सेस टू द नोट्स जो मैं यहाँ पे आपको शो कर रहा हूँ। ये सारी नोट्स मैं वहाँ पे अपलोड करता हूँ। देन सेकेंड थिंग, आई एम कंडक्टिंग माय डेली लाइव क्लासेस एट 8 AM ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप एवरी डे एंड 11:15 AM ऑन यूट्यूब एवरी डे। यूट्यूब पे एवरी डे में ये 2 सेशन रेगुलरली कंडक्ट करता हूँ। देन वेन एवर यू आर सब्सक्राइबिंग टू अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, जब आप ले रहे हो तो आपको क्या बात याद रखनी है? वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर दैट SKUS code, you need to use SKUS code because it will give you 10% discount on Unacademy subscription, whether you are taking plus subscription or you are taking iconic subscription, doesn't matter, but आपको याद रखना है क्या यूज करना है? SKUS code. And what you need to remember is you need to make SKUS code viral. आप जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हो उसमें आपको लिखना है कि SKUS कोड फॉर 10% डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। ओके, ये आप लोगों को बहुत ही केयरफुली और अच्छे से करना है, और खुद लोगे तब तो आपको SKUS ही लिखना है। अक्षय कुमार, शेयर लिंक इन चैट। अक्षय, आई कैन राइट डाउन द लिंक इन द चैट बट आई डोंट नो हाउ टू शेयर दैट लिंक इन द चैट। लेट मी ट्राई इफ आई कैन शेयर दैट लिंक इन द चैट थ्रू द टेलीग्राम, क्योंकि मुझे भी तो ये चीजें लर्न करना जरूरी है ना? आई नीड टू लर्न दैम। Let's see whether I can share it or not on YouTube, or maybe someone will help me out. I don't see link sharing. Okay, go to Galaxy and all. Okay, fine, it's not there. Just give me a minute. Copy. Okay, link copy कर लिए मैंने, and now I am putting this link. No, Avijit Datta. Only those stars die as a black hole who are very, 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 very massive.
who are very massive. Guys, I shared telegram link with Saka name. This is my name. आपको चैट में अगर दिख रहा होगा, यस एंड के ए, सचिन कदम है ये जो दिख रहा है ना, दिस इज माय प्रोफाइल। तो वहां पे मैंने टेलीग्राम लिंक शेयर कर दी है। ओके, सो दैट्स इट, फाइन। सर रिकॉर्ड वीडियो का यूट्यूब में अपलोड होगा? यस, ये रिकॉर्डेड वीडियो कुछ 10-15 मिनट बाद ये रिकॉर्डेड शो होगा, अभी लाइव शो होगा। ओके सर, रिकॉर्ड वाला से और थोड़ा समझेंगे। बिल्कुल सीनू, समझ लीजिए कब अपलोड होगा। गोविंद, ये ऑलरेडी अपलोड है, आप 1 घंटे बाद देखिए, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाएगा आपको। अभिजीत के डाउट का पॉइंट मिल गया। एंड यस, अक्षय के लिए मैंने टेलीग्राम लिंक शेयर कर दिए, जॉर्जी के लिए भी। फाइन, थैंक यू वेरी मच गाइस, आई एम टेकिंग योर लीव, बाय बाय, टेक केयर। वी आर मीटिंग टुमारो एट 8 AM on Unacademy Learning app. Till that time, bye bye, take care, thank you सपना गढ़वाल। अच्छा, और एक बात, मेरी जो स्टूडेंट है, आप लोगों को अगर मेरा व्हाट्सएप नंबर चाहिए तो यू नीड टू वॉच माई ओल्डर वीडियोज।